Hello friends, welcome to Pro Talent, and this is our most probable question answer module number 1 for September 2019. We start with this question number 1. Which countries tied at the top spot in Ipsos Global Happiness Survey 2019? And that country are countries Australia and Canada. So they are the number 1 with respect to Global Happiness Index. ध्यान रहे, इंडिया का उसमें रैंक है करीबन 9th. इंडिया 9th रैंक पे आया विथ 77% ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स आउट ऑफ टोटल 28 कंट्रीज. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. हु इनॉग्रेटेड longest electrified railway tunnel in Andhra Pradesh? Okay, that is M. Venkaiah Naidu. Question में भी उल्टा है ना, that is M. Venkaiah Naidu recently inaugurated longest electrified railway tunnel. Where is it? This is in Andhra Pradesh. Okay, Andhra Pradesh में हो रहा है, and that is between Venkatachalam and Obulavaripalli. Okay, so this is what you should be remembering. Okay, आगे बढ़ते हैं. Which country has elected Olusegun Obasanjo as its 17th Prime Minister? This is Ukraine. यूक्रेन में ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपने सुना होगा. Recently, Volodymyr Zelensky, he was a comedian there and he was elected as a president of Ukraine. So ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए. One is a president and other is a prime minister. Okay, आगे बढ़ते हैं and we talk about number 4. Which became India's first bank to deploy robotic arms at its currency chest to count millions of notes across the country. पूरे कंट्री में ICICI बैंक को बहुत सारी नोटें काउंट करनी पड़ती है. नॉट ओनली ICICI बैंक बट ऑल द बैंक्स हैव टू डू द सेम, एंड फॉर दैट इंडिया की पहली बैंक जिसने रोबोट लगाया है दैट इज कॉल्ड ICICI. कमिंग टू नंबर 5. हाउ मच फंड्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू द ग्लोबल फंड्स टू फाइट एड्स, TB एंड मलेरिया? दिस इज अ 6th रिप्लेनिशमेंट सो फार. ठीक है, टोटल अभी तक हम $46.5 मिलियन दे चुके हैं, एंड इस बार द लास्ट ट्रांच वी प्रोवाइडेड वाज $22 मिलियन. ओके, विच इंडियन क्रिकेटर ब्रोक द इंडियन रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन विकेट कीपर इन T20? This is by ऋषभ पंत. ओके, ऋषभ पंत इज कंसिडर्ड टू बी फ्यूचर, पर कभी भी हमने उनको फ्यूचर की तरीके से देखा नहीं अभी तक. देखते हैं, रिकॉर्ड तो ब्रेक करते हैं पर इनके ऊपर रिलाई करके मैचें जीती नहीं जा पा रही है. देखते हैं ऋषभ पंत क्या करते हैं आगे. सो आंसर इज ऋषभ पंत. कमिंग टू नंबर 7. विच कंट्री टुक ओवर एज अ चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज फॉर 1921 टर्म फ्रॉम रोमानिया? इट इज इंडिया. इंडिया ने ये ले लिया है उनसे. दैट मीन्स इंडिया गॉट दिस. और इंडिया की तरफ से वी आर मिस्टर सुनील अरोड़ा, आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी. ओके, सो मिस्टर सुनील अरोड़ा, दोनों याद रखिएगा. रोमानिया से हमने लिया है चेयरमैनशिप, इंडिया को मिला है, और इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है. इसकी वजह से ही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है इज बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ दिस एसोसिएशन. हु विल चेयर the panel of ministers that will study the proposal of Ministry of Health and Government to ban production and import of e-cigarettes? E-cigarettes ऑर्डिनेंस के द्वारा बैन कर चुके हैं. क्यों? क्योंकि इसमें निकोटीन होता है एंड दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल टू द पीपल, ऐसा माना जाता है. और इस पर्टिकुलर प्रपोजल के चेयर कर रहे थे निर्मला सीतारामन. विच सिटी टॉप्ड इन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर सेकेंड टाइम इन द रो विच इज वियना, विच इज ऑस्ट्रियाज कैपिटल कॉल वियना. ये कंसिक्यूटिवली हर बार ये नंबर 1 पे रहते हैं. दिल्ली इंडिया का 118th पोजीशन पे, while मुंबई इज एट 119th पोजीशन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. whose speeches are compiled and released as a book called लोकतंत्र के स्वर?
लोकतंत्र के स्वर इज अ स्पीचेस बाय मिस्टर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद साहब की ये स्पीचेस है और ये एक बुक के फॉर्म में सेकेंड पार्ट उसका चालू हुआ है, ठीक है। अंडर विच एक्ट मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी and Dawood Ibrahim have been declared as individual terrorists in our country. This is the UAPA, so Unlawful Activities Prevention Act, UAPA 1967। आपको एक बार मैं पूरा बता दूं दैट जैश ए मोहम्मद के चीफ है और पुलवामा टेरर अटैक के पीछे मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर, जमात उद दवा के चीफ, लश्कर ए तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा चीफ ऑपरेशनल कमांडर एंड 2611 के पीछे अपना योगदान देने वाले जाकिउर रहमान लखवी, योगदान तो नहीं बोलेंगे, मास्टरमाइंड बोलेंगे, शब्दों में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम आर द इंडिविजुअल टेररिस्ट, वो इंडिया ने उनको डेजिग्नेट कर दिया है। सो दैट इज डी। ओके, कमिंग टू नंबर 13, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल and tourism competitiveness index for the year 2019? Okay, so India ka rank is 34th. Okay, so this is an improvement compared to previous year, 40th rank tha and now we have improved to 34th. This is good. और इसमें Spain is at the top followed by France and Germany. Name the first Indian Prime Minister who visited Far East Russia. Okay, the place named called Vladivostok. व्लादिवोस्तोक विजिट करने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, है ना। वो वहां पर गए और हमने उनको कुछ लोन देने की भी कोशिश करी। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड। बाय विच ईयर WHO is thinking about eradicating highly infectious childhood killer disease of measles and rubella? ठीक है, मिजल्स और रुबेला को पूरे साउथ ईस्ट एशिया में से निकालने का टारगेट है उनका बाय 2023। दिस इज WHO और इंडिया की तरफ से भी काफी ज्यादा योगदान मिल रहा है इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज व्हाट पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास इज बिटवीन इंडिया एंड USA। फोटोग्राफ से भी शायद पता चल गया होगा आपको। सो दिस इज युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में। विच आइकॉनिक प्लेस was conferred with the best Swachh Iconic Place Award in overall improvement in sanitation category of Swachh Bharat Award? ठीक है, this is, ध्यान रखना आइकॉनिक प्लेस के बारे में बात हो रही है। So this is माता वैष्णो देवी टेम्पल इन जम्मू कश्मीर, while Ministry of Railway won best ministry for implementation of Swachhta Abhiyan. Okay, coming to number 18, for what reason Event Horizon Telescope team were felicitated with breakthrough prize in fundamental physics, also known as Oscars of Science Award? ठीक है, क्या अवार्ड मिला है इनको? Which is fundamental physics. Okay, this is breakthrough prize and this is primarily provided to them for producing world's first image of black hole. ठीक है, ब्लैक होल का पहला इमेज उन्होंने सितंबर 5, 2019 को दिया था। Coming to question number 19 says that name 10,000 acre India's first Greenfield Industrial Smart City inaugurated by Mr. Narendra Modi recently. This is Aurangabad Industrial City. Coming to number 20, where was 9th edition of week-long Joint Maritime Naval Exercise, which is known as SLINEX, which was between India and Sri Lanka, which was held at Visakhapatnam, Vizag. वाइजैक में एक मैच खेला जाने वाला था और वो बिल्कुल बारिश की वजह से पूरा खत्म हो गया। ठीक है, कमिंग टू नंबर 21 which says name the Japan India US trilateral maritime exercise. Trilateral तीन पार्टी मिलती है इसमें and this is called Malabar. Okay, so Malabar is between India, USA and Japan. Coming to number 22, which city is set to host 2022 Asian Games, also known as Asiad? This is by Hangzhou, China. Hangzhou, China में ये 19th Asian Games होने वाले हैं। So with this I am closing this particular module. I hope you like this set of questions. अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट protalentdigital.com से मिल सकता है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा का पूरा PDF। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।